बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। एंड इन इंग्लिश वी आर डूइंग लेटर्स। सो द लास्ट लेसन वाज अबाउट द लेटर एम और जो हमारा अगला लेसन है वो लेटर एम से बहुत ही रिलेटेड लेटर है। दैट इज द लेटर एन। द साउंड ऑफ लेटर एन इज न। To make it more clear, to practice it further, let's quickly look at the story related with letter N, and then we are going to do some interesting activity questions on the book as well. So let's get started. Once upon a time, there was a sunny day in the jungle, and there were different activities going on. सबसे पहले वहाँ पे था एक दरख्त जी, and on that tree there was a nest. A nest was there, and the bird was sitting in the nest. And then there is a pond nearby, and in that pond there was a man, but the man was catching some fish. और वो कैसे fish catch कर रहा था? By using net. उसके पास थी net and he was catching the fish. Wow! And then he is going to eat that fish as well. And then in the grass there was some newspaper as well, and that man was collecting those fish on the newspaper to soak the एडिशनल वाटर, ताकि फ़िश जब वो कैच कर ले तो उसमें जो एडिशनल वाटर है वो न्यूज़पेपर सोक कर ले. So here in this story there was nest, net and newspaper. Let's quickly look at our book's page. Listen, say, read and write the letter N. So tongue behind the top teeth, air comes out through your nose. So here is nest, newspaper and net. So a bird sits happily in its nest on the tree. A man catches fish with his net in the stream, and a newspaper lies on the grass below. Let's see some more words starting with nose. Nuts. Wow, so nutritious to eat in winters. बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ होती है नट्स, आपने ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करनी है. Then net. Some more words are nine, neck and napkin. So what other things start with letter N? Look around, my dear kids, and do the N hunt. Yes, you can find out the things that starts with letter N. What color is the sky at night? Can you tell me what is the color of sky at night? Yes, it is blackish in color. There is a character building tip. Be brave and try your best. So my dear kids, be brave. Take your decisions. And don't be a coward. डरने की ज़रूरत नहीं है. So be brave and try your best to do anything in your life. Moving on with some more words. You, new. B, nib. Ow, now. And t, nut. Here you are going to color this nest. And can you see a hidden N in it as well? Yes, here it is. Now it's time to learn the formation of letter N. So letter N again has three lines: a standing line, a slanting line, and one more standing line. And what about small n? A standing line, go up, make a curve, come down, and then there is a little loop. This way you are going to trace the capital and small letter N. Now write the letter N to complete the words. यहाँ पे हमारे पास कुछ words हैं
but N is coming as the final sound. It is coming at the end of the words, just like P, E, M. Pen. F, A, M. Fan. P, A, M. Pan. Ch, I, M. Chin. K, A, M. Can. And T, E, M. Ten. That is all with our ends page. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन लेटर एन के बारे में. वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स रिलेटेड विद लेटर एन. वी हैव सीन नट्स. Nuts are so important for our health, my dear kids. It keep us warm and it sharpen our minds as well. जो almonds होते हैं, they are so good for our brain. So different things are related with letter N and I have enjoyed this lesson a lot. I hope कि आपने बहुत सी information इस lesson से gather की होगी और अच्छे से letter N को सीखा होगा. हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए लेटर के साथ और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स. डियर टीचर्स, आज का लेटर था हमारा लेटर एन, जिसको हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखा. स्कैन द QR कोड एंड कम ऑन टू दिस वीडियो एंड बच्चों को ये वीडियो स्कूल में भी लाजमी दिखाएं. Dear teachers, there are some instructions for you, like do the exercises in the workbook on pages 63 to 66. Then let's see the activities. Students are little explorers. Tell the learners that nuts are very healthy. Discuss about the benefits of the nuts. So nuts जो हैं वो बहुत healthy होते हैं and they are very good for our health and there are some benefits of them. You are going to discuss them. Then they are little innovators. Show a short animation or video about birds building nests using a tablet. Wow, that is so informative कि बच्चों को पता चले कि birds जो हैं वो अपना nest कैसे बनाते हैं. So you are going to show them a video in which birds are making the nest. Then they are little builders. Provide materials like twigs, leaves and bits of string and help the learners in building nest using these materials. क्योंकि उन्होंने वीडियो देखी है कि नेस्ट कैसे बन सकता है, तो जब आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगी तो वो अपना बहुत ही अच्छा सा क्रिएटिव सा नेस्ट बना लेंगे. They are little designers. Encourage and guide the learners to color the sketch of the nest and the letter N at the top of this page, over here. Then they are little thinkers. Give the learners the number cards from 1 to 9 and ask them to arrange them in order.
इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट्स। डियर पेरेंट्स, आज का लेटर था हमारा लेटर एन, और इससे रिलेटेड हमने स्टोरी सुनी, हमने वर्कबुक पेजेस किए, हमने बुक पे बहुत से वोकैबुलरी वर्ड सीखे और उसकी फॉर्मेशन भी सीखी। आप घर पे भी QR कोड को स्कैन करें ताकि इन लेटर्स की रिवीजन घर पे भी इन वीडियोस की मदद से करवाई जा सके और बच्चों से ओरली एन की वोकैबुलरी यानी कि जो भी लेटर वो स्कूल में पढ़ के आते हैं उसकी वोकैबुलरी डिस्कस किया करें ताकि बच्चों को उसके साउंड और उसके वर्ड्स दिमाग में अच्छे से एम्बेड हो जाएं।